So hello guys, so let's do one thing that we are starting the rapid revision series that would be helpful. So, so let's start understanding. Let's start understanding that. Okay. So first of all, we are going to study the international organization. Okay. Now, in international organizations, in terms of economics, we need to understand first of all about IMF. तो आईएमएफ के बारे में क्या बोलना है कि जैसे ही कोई पूछे आईएमएफ क्या है तो आईएमएफ इज ए ऑर्गेनाइजेशन, उसका रोल क्या है। आईएमएफ का रोल आपको पता होना चाहिए। आईएमएफ का मेन काम है ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करना और इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करना। अगर कोई पूछे कि आईएमएफ का हिस्ट्री क्या है तो आईएमएफ का हिस्ट्री में हम लोग को बताना होगा कि ग्रेट डिप्रेशन के समय क्या हुआ था कि बहुत लोगों का करेंसी डिवैल्यूड हो गया था। ठीक है, क्यों किया था? क्योंकि सभी को अपना एक्सपोर्ट चीप करना था, तो सब अपना करेंसी घटा रहे थे ताकि उनका एक्सपोर्ट सस्ता हो। और इसकी वजह से क्या हुआ कि इस करेंसी वॉर की वजह से सभी को नुकसान हुआ। तो 1949 में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में आईएमएफ बनता है 4 मैंडेट के साथ। पहला चीज, क्योंकि सब करेंसी वॉर चल रहा था तो सबको बोला गया कि भाई रोक दे करेंसी। तो सब क्या किया, रोक के कि अब करेंसी को किस में पैक करना होगा। तो सब पैक किया यूएस डॉलर में, यूएस डॉलर पैक किया गोल्ड में। ठीक है, किया था, चेंज कर दिया। सेकेंड, अब बहुत सारा ये इस तरह से जो आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गड़बड़ा गया था देश सबका, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्राइसिस चल रहा था। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए एक आईएमएफ का मैंडेट था। ग्लोबल ट्रेड को, इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करने का मैंडेट था। और बाकी सारे देशों पे मॉनिटर करना ताकि उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट का हेल्थ अच्छा रहे, ये सर्विलेंस करना टेक्निकली, ये काम भी आईएमएफ को मिला। तो आईएमएफ में कुछ कुछ टर्म एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला है कि आईएमएफ का वर्किंग में काम करता है सिस्टम ऑफ कोटा। जो कोटा सिस्टम है आईएमएफ में क्या है, कोटा किसी भी देश का डिसाइड होगा आपका इकोनॉमी किस साइज का है, आप कितना ओपन है, आपका फॉरेक्स रिजर्व कितना बड़ा है। ठीक है, अब एक बार आपका कोटा डिसाइड हो गया ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्टर्स, तो आपको कितना हेल्प मिलेगा आईएमएफ से, इट विल डिपेंड ऑन योर कोटा। दिस 1.45 इंटू कोटा इज योर मैक्सिमम हेल्प। ठीक है, और एक्चुअल में ये जो कोटा है इसमें आपको देना होगा स्टेट्यूटरी ड्राइंग राइट्स। ठीक है, तो आपको एसडीआर पे करना पड़ता है व्हाइल ज्वाइनिंग द आईएमएफ। इट्स यू काइंड एज अ सब्सक्रिप्शन फी टू जॉइन आईएमएफ। ठीक है, एंड हाउ मच योर कोटा इज, हाउ मच यू आर गिविंग द स्टेट्यूटरी ड्राइंग राइट एसडीआर फंड्स, okay, SDR quota, so that is deciding your voting power within the IMF. So in IMF everybody do not have equal power, ये हमको याद रखना है। जिसका जितना कोटा है, on the basis of that that much power is there. Okay, तो समझ लीजिए कि मान लीजिए इंडिया आईएमएफ को ज्वाइन किया, तो इंडिया का कुछ कोटा होगा दैट इंडिया विल पे एज अ सब्सक्रिप्शन फी टू आईएमएफ। उसके अगेंस्ट में आईएमएफ विल पे द स्टेट्यूटरी ड्राइंग राइट्स। now the amount, the quota that the India will pay to IMF, it is in two terms: the 75% in the form of our local currency and the 25% in the form of five designated currency within the IMF. That is the dollar, euro, yuan, yen, and pound. Okay. So this 25% that is in the five designated currency that the India will pay, that is actually the reserve tranche facility or the reserve tranche position of India in the IMF. Okay. Okay. Now, if you keep more money in IMF than your quota, okay, so IMF will pay interest to you. Okay. And if you have less SDR than your quota, then you have to pay interest to IMF. This is the simple math that IMF is following. Okay. So what are the ways that if you want to take loan from IMF? Okay, the very first thing that I will pledge my SDR quotas or the SDR rights to any other country who is the member of IMF. Okay, and the another country will accept that SDR and pay me the money. Now the country who get the SDR of mine have extra SDR than its quota, so IMF will ultimately pay the interest, and I who have less than my quota because I have given it as a pledge,
I will have to pay interest on that as well. Okay, this is the first thing. Now, if this no country willing to pay, willing to take my SDR, then the next way the IMF can do that, it can use that maximum limit of 1.45 into your SDR as a money that can provided by you. But if that also not work, the third thing that IMF will only pay because it shows that you are structurally weak. That IMF will pay only when you conditionally show that you are able to repay that money. So IMF can give you three kinds of packages. There is a standby agreement. So in standby agreement, that IMF give you loan in condition that you will repay it within the 1 2 years. That is the standby agreement. Now the second thing is the extended fund facility. Now the extended fund facility is the structural uh, for solving structural problems. The IMF will pay give you the loan, and it will around 3 to 4 years. Okay, and there is a rapid financing instrument within IMF also, that in order to cope up with the sudden shock in the market scenarios. Okay, so IMF, once the IMF deal a structural adjustment program, you need to understand that the whole world will now cooperate with you, because signing an IMF accord is like a signal to the rest of the world that now the economy is fine. This is the thing. Okay. Now, IMF is created in 1949, but the SDR thing is coming in 1969. So this SDR is actually the potential claim that you can get an actual case from other members when needed. It's not like you always get it. Okay, I have already shown you like there are second way where the countries can deny as well, but it's like a potential claim that you might get it. Okay, so SDR is also considered as a global reserve asset. Okay, so we keep the SDRs in our foreign exchange. Okay, so it will provide the exchangeability, and it is also a supplementary liquidity. Okay, so whenever we think about our foreign exchange में क्या क्या है? So in foreign exchange we have gold, we have foreign currency, we have SDR, and we have RTF. So our foreign exchange is made up of these four things mainly. Okay, we need to understand this. So SDR is a reserve asset that you do not need to keep with the IMF. You need to keep it within your foreign exchange only. Okay. Now we need to understand one more thing about Washington Consensus. So Washington Consensus क्या है? हाँ, सिंपली याद रखो, वाशिंगटन कंसेंसस है 10 इकोनॉमिक पॉलिसी का एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट that can be prescribed for any country, any developing country that is hitting any crisis. So Washington Consensus, IMF, World Bank और US Treasury का मिलके policy document है. So if a developing country hit any kind of crisis, they will say do these things. You first of all आपको अपना deficit घटाना होगा. You need to think of your public expenditure as well. You need to increase your tax base. You need to check the market interest rate. You need to check the floating exchange rate. You need to decrease the tariffs. You need to check, liberalize the regulations for the FDI. You need to privatize some of the sectors. You need to deregulate. You need to think on the property rights. So these are the things that a foreign companies look up. Okay, so the new Washington consensus, they allow for industrial policy. So okay, means like it doesn't mean that state cannot give subsidies and support to the specific sectors. It is allowing, but you need to keep overall things in the favor of the global order. This is the thing of the Washington consensus. So now move to WTO. So जब भी WTO के बारे में पढ़ना हो, तो we need to understand that WTO is not a Bretton Woods organization. So when the Bretton Woods conference is done, it the IMF, the World Bank is coming into the picture, but people are not agreed with the World Trade Organization. So there are some general agreements on the trade and tariff that took place at that time. But in 1995, in Marrakech conference, the WTO coming into the picture. So we need to have an idea that what are the basic principles of the WTO. The very first principle is the most favored
नेशन का प्रिंसिपल. What is the most favored nation का principle is the Article 1 for the General Agreement on Trade and Tariff. Okay. So most favored nation, it simply means anti-discrimination of the global trade. So for a like product, you cannot discriminate with any other country while entering into the India. Once a certain kind of tariffs or any kind of tax that has been paid by the company. Okay. So there are certain exceptions to that in that most anti-discrimination law, that there is a set of trade agreements you can do for the security purpose you can do, and there is a system of preference that the developed country help developing country for growing. Okay, so when you see the preferential trade agreement uh, is like within the countries for specific products, and then it goes for, when you go beyond that, it goes to free trade agreement, when then within the boundary the two, everything between the two country can be freely traded. Okay, now there is a concept like within like if lot of countries are within the proximity, so they are trying not just to sign a free trade agreement, they try to sign a trade agreement with the union itself, because otherwise people can route through the less tax based country. Okay, so when in the custom union, that in the union within the boundary of the multiple countries, uh, and within the boundary, when any product reach, it will apply the same tax. Okay, like you is a custom union. So from the custom union, it goes for the common market. So a common market will be a custom union, and it will also allow a free flow of factor of production. Okay, so when you see the Mercosur of the South America, it is a common market. Then from a common market, it will go to a economic union. So economic union is kind of a political body. So now it will have this like harmonizing economic policy. So European Union is, you can kind of say, economic union. Now then there is economic and monetary union. When we say economic and monetary union, it has the economic policy as well as same, as well as have a common currency, as well as common central bank. And when there is a complete integration, it will have the same fiscal policies, budget as well. So this is the like ordering, like from how from the preferential trade agreement we can move out to the unified fiscal policy. This is the thing. Okay, so this is the most favored nation ka thing in the WTO. The second thing is, the second principle is free trade generally through negotiation. So द एम इज दैट वी वांट ए प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन. ठीक है, इसके लिए पहला जीएटीटी का राउंड हुआ, फिर उरुग्वे राउंड हुआ, फिर दोहा डेवलपमेंट राउंड हुआ. इसका मतलब है कि ultimate aim is that we need to do free trade with each of the country, but we want a progressive liberalization. So the countries will going to negotiate, and will ultimately, through the help of negotiation, we will come with the free trade. This is the second principle. Now the third thing is the promotion of fair competition. Okay, now इसमें तीन चार चीज आ रही है. पहला है एंटी डंपिंग. व्हाट इज डंपिंग? हाँ, डंपिंग है व्हेन डंपिंग में आपको बस चेक करना है कि जो होम प्राइस है और जो एक्सपोर्ट प्राइस है, यह दोनों में अंतर है. अगर एक्सपोर्ट प्राइस इज लेसर देन द होम प्राइस, you can say there is a dumping margin heading on. So the core logic is that ki foreign company want that I'm selling right now at loss to kill the local competition in the next country, and I will raise the price once I achieve the monopoly there. So what the next country can do, they can add the anti-dumping duty like we did in India, like we add anti-dumping duty to the Chinese solar panels, so that our local industry as well as can reach up to that level, so that we are not completely dependent over the time on the Chinese companies. Now the second thing is the countervailing. Countervailing is like against government. Okay, like if any next country they decrease their excise or provide a lot of grants, okay, so that their production price will decrease, and they will increase the export. So the next country can do, they can use the countervailing duties as well as.
So now for the safeguards purposing, you can add a duty. Okay. So this is the you can say promotion of fair competition. So most favored nation. Second one is to free trade with negotiation, and the third one is promotion of fair competition. Okay, this is three thing. Fourth thing is encouraging development and economic reform. Okay, now there is a special and differential treatment to least and developing countries. Okay, so there is a longer time period. So we will provide technical assistance. We will provide preferential market access. Okay, तो यू अंडरस्टूड। फोर्थ है कि हम लोग क्या करेंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म को इंकरेज करेंगे और डेवलप करेंगे। मतलब बेसिक इसमें है स्पेशल एंड डिफरेंट ट्रीटमेंट, मतलब जो लीस्ट और डेवलपिंग कंट्री होगा उसको आप लोग स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे कि ट्रिप्स को लेके उनको लॉन्गर पीरियड देंगे फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रिप्स। उनको हम लोग टेक्निकल असिस्टेंस देंगे इन ऑर्डर टू डू दैट। वी आर गिविंग देम द प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस कि उनके प्रोडक्ट को और आराम से भिजवाने देंगे। बट इसमें इशू है कि जो सेल्फ डिक्लेरेशन है कि कोई कंट्री डेवलपिंग है कि डेवलपमेंट, वो सेल्फ डिक्लेयर करेगा। ठीक है, दिस इज द थिंग। तो डब्ल्यूटीओ में बेसिक एग्रीमेंट्स है आपका जीएटीटी। जीएटीटी 1948 में हुआ था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। देयर इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज। देयर आर ट्रिप्स। सो वी हैव अंडरस्टूड लाइक इन दी फ्री ट्रेड थ्रू नेगोशिएशन। तो पहला राउंड था आपका जीएटीटी राउंड। So in Uruguay round TRIPS का concept आया था during 1995. Then there is a TRIMS, and then there is a agreement on agriculture. So basically within TRIPS you can see क्या क्या है। हाँ, so we have understood the four principle of WTO. We need to understand the WTO agreements like GA GATT, ये सब तो पढ़ लिया। सब GATT का ही था। GATS होता है और आपका TRIPS होता है, ट्रिम्स होता है और एओए होता है। तो व्हेन वी लर्न अबाउट ट्रिप्स, तो ट्रिप्स में क्या क्या है, ट्रिप में वी नीड टू थिंक अबाउट पेटेंट। पेटेंट क्या है कि किसी भी इन्वेंशन के लिए आपको 20 साल का प्रोटेक्शन मिलेगा, दैट इज द पेटेंट। ओके, नाउ द कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या चीज के लिए हो रहा है, किसी भी लिटरेरी और आर्टिस्टिक चीज के लिए आपको कॉपीराइट मिलता है। ठीक है, दिस इज फॉर 50 ईयर्स। ठीक है, ट्रेडमार्क आपको किसी ब्रांड के लिए मिलता है। जीआई आपको किसी स्पेसिफिक प्लेस के लिए मिलता है, ज्योग्राफिक इंडिकेटर। ओके, इंडस्ट्रियल डिजाइन के लिए भी होता है कि क्या प्रोडक्ट का लुक है उसके लिए। इंटीग्रेटेड सर्किट का लेआउट डिजाइन के लिए भी होता है, ट्रेड सीक्रेट के लिए भी होता है। ठीक है, तो ये ट्रिप्स का कंसेंसस ही था कि हम लोग अपना पेटेंट लॉज में चेंज किए हैं। क्योंकि 2005 से पहले क्या होता था कि प्रोसेस पे पेटेंट होता था। ओके, अब प्रोसेस पे पेटेंट है तो हम लोग इन प्रोडक्ट किसी और दूसरे प्रोसेस से बना लेते थे। अब क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट पे पेटेंट लग रहा है पोस्ट 2005 जो हम लोग पेटेंट एक्ट आया अपना। ठीक है, विथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रिप्स, कि नाउ वी कैन नॉट जस्ट चेंज द प्रोसेस एंड कम अप टू द सेम प्रोडक्ट। सो दिस इज वन थिंग। सो एक ये रूल का इस्तेमाल करके कि हाउ with the help of that exception of the trips we are become the pharmacy of the world। ओके, तो बहुत फायदा भी होता है सबसे। तो आप नोट कर सकते हैं ट्रिप्स में तो हम लोग पढ़ लिए ना, ट्रिप्स में जैसे पेटेंट पढ़ लिए हैं, कॉपीराइट पढ़ लिए हैं, ट्रेडमार्क पढ़ लिए हैं, जीआई पढ़ लिए हैं, और आपका इंडस्ट्रियल डिज़ाइन पढ़ लिए हैं, और इंटीग्रेटेड सर्किट का डिज़ाइन पढ़ लिए हैं, और क्या है, 1 2 3 4 5 6, और ट्रेड सीक्रेट पढ़ लिए हैं, चेंजेस इन पेटेंट लॉ समझ लिए हैं, और एक है आपका नोवार्टिस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। नोवार्टिस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है कि कैसे हम लोग एवरग्रीनिंग को अलाउ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कि बार बार आप पेटेंट को रिन्यू कर रहे हैं, ये नोवार्टिस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, और कंपलसरी लाइसेंसिंग भी हम लोग समझिए कि कोई एकदम क्रिटिकल केस होगा तो हम लोग कंपलसरी लाइसेंस दे सकते हैं। नाउ ट्रिप्स समझ गए, देयर इज ए ट्रिम्स एग्रीमेंट ऑल्सो। नाउ दिस ट्रिम्स एग्रीमेंट इज फॉर एफडीआई, ये समझना है एफडीआई के लिए। हाँ, इसका मतलब है ट्रिम्स आपका जी ट्रिप्स और ट्रिम्स ये जीएटीटी के अंदर ही है। ठीक है, ये भी याद रखना है कि ट्रिम्स सिर्फ गुड्स के लिए है। ठीक है, इसका मतलब है
नो रेगुलेशन फॉर एंट्री, ट्रिम्स सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे लगेगा। ओके, नो रेगुलेशन फॉर एंट्री, ट्रिम्स अप्लाइज वंस इन्वेस्टमेंट कम्स इन। ओके, तो बेसिक हम लोग समझ लेते हैं कि ट्रिम्स है क्या। तो ट्रिम्स ये है आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को बचाने के लिए, मतलब कि अगर कोई फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट करती है इन गुड्स नॉट इन सर्विसेज, तो किसी भी देश का जो गवर्नमेंट है दे कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट द फॉरेन कंपनीज टू यूज सर्टेन मेजर्स। लाइक अगर हम आया कोई फॉरेन कंपनी, हम बोल रहे हैं भाई उसको तुम लोकल कंटेंट यूज करो अपना बिल्डिंग बनाने के लिए, कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए, या आप ट्रेड बैलेंसिंग रूल्स नहीं लगा सकते हैं कि आप हमारे देश में आए हैं तो आप हमारे देश का चीज़ खरीदिए या एक्सपोर्ट कीजिए या इंपोर्ट कीजिए, दिस काइंड ऑफ थिंग। ओके, फॉरेन एक्सचेंज को रिस्ट्रिक्ट कर दिए कि मान लीजिए कुछ इंपोर्ट करना है तो दे वांट द फॉरेन एक्सचेंज, सो आप उसको नहीं दे रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज, तो ये चीज़ है। कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है वहां से कि बस बस आपको यूज कर रहा है एंड बाकी चीज को प्रोडक्ट कर दे रहा है, तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो देन द ट्रिम्स आर कमिंग इनटू द पिक्चर दैट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी डोमेस्टिक ट्रीटमेंट मिले, दिस इज द थिंग। बट द कंट्रीज को जरूरी है कि इफ एनी कंट्री वांट टू इंडस्ट्रियलाइज, इशू इसमें यही है कि दे वांट दैट द फॉरेन कंपनी विल बिल्ड द लोकल सप्लाई चेन, बट ट्रिम्स उनको प्रोटेक्ट करता है, तो दैट वाज ए कंटेंशियस इशू हेयर। ओके, टेक ट्रांसफर पूछा जा सकता है। नाउ द लास्ट वन इज एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ओके, नाउ व्हाट इज एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर? So you need to think about agreement on agriculture is like, we need to make the global agricultural trade fair। कैसे करेंगे? बाय रिड्यूसिंग दी सब्सिडी। तो पहला चीज है इसमें मार्केट एक्सेस, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप नॉन टेरिफ बैरियर को आप टेरिफ बैरियर में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि टेरिफ बैरियर आप पकड़ सकते हैं, उसको कम ज्यादा मॉनिटर कर सकते, पर नॉन टेरिफ बैरियर है वो इम्प्लिसिट है, वो उसको खोजना इजी नहीं है, ठीक है। तो ट्रेड बैरियर ट्रांसपेरेंट होगा ताकि वो नेगोशिएट हो सके। फर्स्ट इज द मार्केट एक्सेस, सेकेंड इज द एक्सपोर्ट सब्सिडी। ओके, तो एक्सपोर्ट सब्सिडी नायरोबी पैकेज में आया था कि एक्सपोर्ट सब्सिडी को बंद किया जाए, ठीक है ना, कि आपको हम एक्सपोर्ट प्राइस कम करने के लिए सब्सिडी दे रहे हैं। फिर डोमेस्टिक सपोर्ट के लिए आपको बॉक्सेस बनाया था कि ग्रीन बॉक्स है, ब्लू बॉक्स है और एम्बर बॉक्स है। तो ग्रीन बॉक्स में उस तरह के सब्सिडीज या डोमेस्टिक सपोर्ट्स हैं जो अलाउड है ग्रीन बॉक्स में, जैसे आप रिसर्च के लिए, इंफ्रा के लिए, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट के लिए ऐसा कर सकते हैं, इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है। फिर ब्लू बॉक्स हुआ जो अलाउड है, बट जैसे कि लिमिटेड प्रोडक्शन सब्सिडी। ओके, बट एम्बर बॉक्स में रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे आप खरीद ले रहे हैं, एमएसपी हो गया, सब्सिडीज हो गया, ये सब रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। तो डब्ल्यूटीओ सब्सिडी कैलकुलेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ 1986-68 के प्राइस में, 1986-1988 के प्राइस पे। तो 5% डेवलप्ड कंट्री को मार्जिन है, चेंज कर सकता है, और 10% डेवलप से ज़्यादा वो नहीं दे सकता है, ठीक है। ये लिमिटेड प्रोडक्शन सब्सिडी है कि आप कम कीजिए भैया प्रोडक्शन, नहीं तो आप ग्लोबल मार्केट के प्राइस को डिस्टॉर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। बाली में पीस क्लॉज हुआ था 2013 में कि नो कंट्री कैन गो फॉर कोर्ट बिकॉज इंडिया यूज फॉर फूड। इंडिया आर्गुमेंट दे रहा है कि वी आर नॉट गिविंग द सब्सिडीज टू द फार्मर फॉर डिस्टॉर्टिंग द ग्लोबल प्राइसेस, बट वी आर गिविंग फॉर आवर फूड सिक्योरिटी, ठीक है। राइस के लिए, केवल राइस के लिए, ठीक है, कि अगर राइस के लिए सब्सिडी देता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो एक लेगेसी है इनइक्वालिटी का, वो समझना होगा कि डेवलप्ड कंट्री क्या कर रहे हैं कि जो अपना सब्सिडीज को ग्रीन बॉक्स में मूव कर रहे हैं, ठीक है, और इंडिया जो है एम्बर बॉक्स में स्टक हो गया है बिकॉज फार्मर्स नीड सपोर्ट फॉर देयर सर्वाइवल, ये चीज है। तो ये जरूरी भी है कि आपका अधिकतर फंड ग्रीन बॉक्स वाले में हो, ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग इकोनॉमिक सर्वे का पहला चैप्टर पढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है इकोनॉमिक सर्वे इस बार का? तो फर्स्ट चैप्टर ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे इज सेइंग कि पहला क्वेश्चन है कि व्हाई इंडिया इज फोकसिंग सो मच ऑन इंटरनल डिमांड एंड कैपेक्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे पहले बोल रहा है, दुनिया का स्टेट बता रहा है कि दिस वर्ल्ड इज गोइंग ऑन इन पोली क्राइसिस। सो
इकोनॉमिक सर्वे पोली क्राइसिस का बात करता है। ओके, सो पोली क्राइसिस में क्या है कि कहीं वॉर चल रहा है, कहीं क्लाइमेट इशू चल रहा है, कहीं इंटरेस्ट रेट ऊपर ज़्यादा है, मतलब लोग क्या कर रहे हैं, अपने सप्लाई चेन का वेपनाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द, तो इकोनॉमिक सर्वे बहुत बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करता है, दैट इज इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट। सो देर इज एन इकोनॉमिक पॉलिसी दैट इज टू ग्रो योर इकोनॉमी इंटरनली विद द हेल्प ऑफ द, like there are the three aims of economic policy. You need to maximize the growth, decrease the inflation, increase the employment. ये basic है, but in the statecraft we, you just not do this kind of thing, but you need to restrict your export. You need to challenge the other countries with wars, tariffs, this kind of thing you need to understand. ओके, सो डब्ल्यूटीओ के उस ट्रेड बेस्ड ऑर्डर को हम लोग अब समझते हैं स्टेट क्राफ्ट का। स्टेट क्राफ्ट इज लाइक द ऑपोजिट ऑफ दिस फ्री ट्रेड। ओके, कि आप अलग अलग रूल्स को यूज करके, अब फिर एक चीज पूछा जाता है क्यों अब हम लोग डब्ल्यूटीओ पे ट्रस्ट क्यों हट रहा है, क्यों डब्ल्यूटीओ एज ए यूनिफाइंग ऑर्गेनाइजेशन वो वीक हुआ। तो अब कंट्रीज क्या हो रही है कि इंस्टेड ऑफ हैविंग ए ग्लोबल डील्स, कंट्रीज आर गोइंग फॉर बायलैटरल ट्रेड्स। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे एक तरह से इकोनॉमिक डाइवर्जेंस हो रहा है, ये सर्वे बोल रहा है। इकोनॉमिक डाइवर्जेंस कैसे, यूएसए तो ग्रो कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एआई, यूरोजोन यूरोप स्टैग्नेंट हो गया है, चाइना डिफ्लेशन से जूझ रहा है, और अब वो क्या करना चाहेगा, डिफ्लेशन तो वो डंप करना चाहेगा अपना चीप गुड्स। सो इन दिस होल सिनारियो, व्हाट इकोनॉमिक सर्वे इज सजेस्टिंग फॉर इंडिया, दैट वी वांट स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी। तो स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी क्या है कि वी नीड टू बी द पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन सो हार्ड दैट वी कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। सो एक टर्म ये लोग यूज करता है पैसिव इंटीग्रेशन, कि we just not want to be passively integrated, we want strategically indispensability in the economy. Okay, so through our generic medicines, so through our global capability centers, through critical mineral resource extraction, in this kind of thing ये बोलता है। ठीक है, अब कुछ कुछ इकोनॉमिक सर्वे हाईलाइट करता है कि प्राइमरी डेफिसिट किसी कंट्री का अगर ज्यादा है, इट मीन्स दैट यू आर बोरोइंग टू रन दैट कंट्री। सो इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है कि if you see the primary deficit of the countries, so if you see the primary deficit of the countries, they are higher than the means like pre-pandemic levels. Okay, so means all the countries are right now borrowing in order to run their countries. So agar country ka high primary deficit hai, it will impact on your stability. So also survey is checking the sovereignty means long term capital bonds also. Okay, so ये कह रहे हैं कि bond yield is continuously increasing. So means bond yield of various countries bonds are increasing. अब bond yield बढ़ रहा है तो इससे क्या है, like borrowings are expensive. When borrowings are expensive, it is like a crowding out effect for the private parties. Okay, this is the one thing. The third thing is the global policy uncertainty. So पहला चीज कि आपका प्राइमरी डेफिसिट बढ़ रहा है, सेकेंड चीज कि लॉन्ग टर्म कैपिटल बॉन्ड्स का बॉन्ड इल्ड बढ़ रहा है, थर्ड थिंग कि आपका ग्लोबल पॉलिसी अनसर्टेन हो रहा है। ठीक है, इन्वेस्टर अभी वॉच करेगा, वेट एंड वॉच करेगा तो ग्रोथ कम होगा। व्हेन यू सी द ग्लोबल एफडीआई फ्लोज, वो भी घट रहा है। ठीक है, अब कोई नया मनी नहीं आ रहा है, so if you can see the turnout between the MOUs and the actual FDIs are actually less. ठीक है, so हम लोग बोल सकते हैं वी आर मूविंग अवे फ्रॉम इकोनॉमिक पॉलिसी टू इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट। सो अब ट्रेड जो है, इट्स नो लॉन्गर अबाउट इफिशियंसी ओनली, इट्स अबाउट सिक्योरिटी एज वेल। ठीक है, नाउ अब एफडीआई क्योंकि कम आ रहा है तो इंडिया के लिए क्या है, अब इंडिया नीड टू कम्पीट मोर। वाई, देखो इसलिए बोला जाता है कि अगर क्यों हम लोग आत्मनिर्भर भारत बोल, mission is very important. So the logic behind the Atmanirbhar Bharat is that we want strategic indispensability in the sector. Since the FDI flow is less, हम लोग को समझना होगा कि in order to capture the more global capital, you need to show the world that I am much more capable than the previous times. So you need to have more liberal labor codes, you have more PLI schemes, that kind of thing. So ये चीज हम लोग को दिखाना होगा। अब इंडिया का ग्रोथ के बारे में सर्वे बात करता है। सो देयर आर लाइक
for aggregate demand we have the consumption P, means like C plus I plus Z plus X minus M. So for the first time economic survey is saying that we are having the tremendous stability. It is due to private final consumption expenditure. Okay, so it is the most important driver of the economy right now, that we are not export oriented economy. So China, which is facing deflation, it is a export oriented economy. Okay, now we are it's a good signal for us that we are a domestic demand based economy. And the much better thing is that this consumption is coming from the broad area. Means the NABARD survey is also showing that the rural consumption is also increasing with the urban consumption. Okay? So if rural consumption is increasing, it will give you a signal that our MSMEs are working fine. It means our policies that mean for increasing the MSME reserves, that is working fine. This is the one thing. Now our GDP is greater than GVA. What does it mean? GDP is greater than GVA. It means our indirect tax collection mechanism are strong. This is a good signal. Third thing is that we are service based economy, that the GVA input of service is much greater than manufacturing. Like it's around 9.3% for GVA for the service, and 8.4% for. But one more thing that we need to understand, that the this gross factor capital formation. So gross fixed capital formation, that is the terms for the investment related growth. So that is also growing. So we can say we have the twin engine of growth, that one growth coming from the private consumption and one growth coming from investment side. Okay, now we want much more that investment related consumption, like because building factories, it is a labor intensive job, it will give much more employment. Okay, this is one thing. So if you understand the GDP deflator, that what does the nominal and the real values. Okay, so for the agriculture and food, due to food inflation, you can see the GDP deflator is much more for that agriculture sector than for the services sector and then for manufacturing sector. Because right now there is a question survey answering that is India deindustrializing? Why? Because the share of manufacturing in the nominal GDP, it is decreasing. Okay, so you need to argue here that there are two or three things here. The first thing is that the reversal in terms of trade is happening. It means that for the manufacturing goods, with the time increasing, the goods become cheaper and much more better. Okay, but in case of services, it becomes expensive only year after year. Okay, so when you see the share of manufacturing goods in the nominal sector, it is shrinking. Okay, but price of services are getting faster. So but when you see the real numbers, it says the volume that the manufacturing is providing, it keeps stable. Okay, it's around 70 to 19% only, but just due to the price effect, that the relative things in compared to manufacturing in the services and the agriculture, their price are increasing much more in compared to the manufacturing goods. Okay, so this is the thing. Therefore in the 2015 or yes, in 2015 we have changed the statistical measures, that we are now measure with the help of GVA base price. This is the third thing. Now one more thing that we need to understand, that we are at the crux of that magic number right now. For our manufacturing, we are using the 74% of the capacity utilization, but it is saying in the economy that once your capacity utilization will cross than 75%, it will create new investment cycles, that is like a crowding in for the country. Okay, so this is a good thing. Now one more thing is that now government is doing investment in the critical public capital expenditures. Okay, so it will act like a crowding in. Now once government invest in the public expenditure, it will crowding in of the private expenditure. So this is the one thing. So investment led growth is always a better growth, because it is a permanent growth. Okay, because consumption can be changed anytime. Okay, this is one thing. Now we need to understand about the external sector. Means like what is the structural potential of India, like how India is like stable during this time of poly crisis. So first of all, India के लिए बताते हैं कि when you see the global trade, your benchmark is your current account deficit, like how much you are exporting and how much you are importing.
So we can say it is our like one of the lowest 0.8% of current account deficit. It will show that our economy is right now in a healthy state. Okay, we can say this is an argument that this is a policy against our statecraft, like the global statecraft that is happening around us. Okay, so merchandise mein to we have always deficit, but we need to take care that we have service surplus, plus we have the remittances. Okay, so once we have services surplus and the remittances, it will manage our merchandise deficit. Okay, so it will a critical thing here. So the economic survey is measuring this thing in terms of total factor productivity. So in order to value the GDP, it terms like the GDP is composed of three things: your capital, your labor, and how much you use that labor and capital efficiently. This is a three parameter. So for the capital thing, the companies are saying, I mean, it's like the central banks are saying that we are now using much more cleaner balance sheet with the help of that bad banks things. The government is much more investing on the public capital expenditure side. So in labor side, we are also working on the formalization of economy. We are rising the labor force participation rate in efficiency kind of thing. This is the most important thing, that right now government, due to their much more investment in the critical infrastructure. So when you see our digital public infrastructure, when you see our infrastructure, logistic infrastructure, when you see our freight infrastructures, so this kind of thing will help the capital and labor to move much more better results in our country. Okay, this is the thing. So statistical tools का भी बात हुआ है कि like we are doing the nowcasting for much more evidence based policy making, for the better service का monitoring. We have the SESA. Okay, we are using the E Sigma, you are using CAPI. Okay, so this is the first chapter is saying related to the economic survey. So this is the three answer. The first is that what is happening around the world. Second thing, that um, what is the state of India? Okay, what is the India's is growing or not? The third thing is that what is the state for the India's manufacturing, and the fourth one is that like how India is stable. Okay, so this is for the today. Thank you very much.